All of you. Good afternoon, respected faculties and students. Welcome to our today's webinar. The topic of our today's webinar is going through the UPSC exam preparation. Welcome, Mr. Pankaj Kumar Gautam, and I would like to introduce Mr. Pankaj Kumar. So, Mr. Pankaj Kumar is a career counselor, a teacher, and a programmer, and also I have done postgraduate from the NIT and right now currently pursuing the PhD and having the 8 years of experience into the teaching field of computer science and engineering. Have the knowledge of the several subjects, okay, and cleared the UPSC prelim for the 3 times, and right now he's appeared for the mains also, okay, and cleared the gate examination for the 4th time, and he is also the UGC NET qualified teacher. So welcome to Mr. Pankaj. Okay, thank you, Umang. Everyone. This is Pankaj Kumar Gautam from Ayodhya, and today I'm going to just explain the some intricacies and preparation for UPSC examination. So I would like to thank Mr. Rajiv, Umang, and other staff members who have given me such a beautiful opportunity to express my views and my experience among yourself, so that any student who have some aspiration to join the coveted Indian services would be benefited from my views, and he or she can start the preparation as early possible to qualify the examination. So first of all, I would like to give you the idea and the process and about advertisement of UPSC examination. So many of you must be aware about this UPSC examination, that this UPSC examination stands for Union Public Service Commission examination, and this is it is said that this is one of the toughest examination in the world, because the success rate of candidates qualifying this examination is very minuscule as compared to other competitive examination. And you must have aware about the roles and responsibilities of the persons who have qualified this examination is tremendous, and there are a lot of opportunities are there while on when you join these coveted services. So today I will give my best experience, so that any student who want to join this join for the preparation and have any aspiration for the examination would be benefited. So first of all, we would like to tell you the examination pattern and when this examination notification came. So generally this examination notification appears on the UPSC portal in the first week of March. Every year this notification will come, and they announce the various seating availability, how many seats are there in various services. So if you want to go for the preparation, you first have the knowledge about when this advertisement will come, when this advertisement will appear on the portal. So you must be you should check the portal of UPSC examination. So at the first week, you can say first week of March, the portal display the advertisement for that current year, and this generally valid for 1 month, and the examination time is generally also fixed. Each year they conduct examination at the end last week of June, but this year due to some COVID situation, the examination has been postponed in the month of October. So this is the advertisement dates and examination. This is generally fixed, but this year COVID situation, they have postponed the examination for the benefits of the students, and some students, so they can they take much more time to prepare for their examination. So generally they fix the examination date
in the last week of June. But this year, due to COVID situation, they have postponed the examination for the first week of October. So UPSC preparation generally requires a lot of hard work. You have to very patience. It requires a lot of patience, your hard work, continuity, and your family support as well. Because this examination is not very easy. It is very tough to crack, and this generally requires your continuous effort on dedicated studies, dedicated source material, dedicated mentors. If you are going to opt for any mentor, you must stick to the plans. You must be in the vicinity of the syllabus. You must be in the domain of the curriculum, or you can say the syllabus that is mentioned in your UPSC portal, because the syllabus is vast, and there is a, if you doesn't fix your study on some domains, you will going to lose your track path. And this happens a lot of students who start their preparation for this examination, but they lose the track in the midway, because they try to grasp all the knowledge, all the information on internet, on some other materials. So they feel lost. They feel lost in the mid of examination. So today I am just going to just explain the what are your track and how should you track your plan for action and your study materials. So you must be in the right track if you are opting any mentor, suppose any coachings, or some any person that have some previous background of clearing this coveted examination, then you must stick to the plans. So UPSC examination, this examination generally have two phases. You must be aware about the various examination, that there are certain phases of examination. This examination also has various phases, various, you can say, stages, and this examination go through generally three stages. First phase is called the CSAT examination, or preliminary examination. Preliminary examination means you have to go through the preliminary portion of the examination. In that they conduct generally two papers. First one is first paper 1 and paper 2. Paper 1 generally consists of the your knowledge about various subject. The syllabus of each and everything you can find on the portal, and the syllabus is generally in the syllabus they have mentioned each topic for each areas. So this is the, you can say, the area that they want to cover. Means they have included various subjects like science and technology, physics, chemistry, and geography, economy. They include the questions of each and every areas, but they mention that they are just asking the question based on elementary knowledge. But right now the standards of question is above this elementary knowledge. You have to be precise, be focused on the topics that they have mentioned in the UPSC examination syllabus. So if you want to study, go through the examination, first you must have a copy of the syllabus. Your study should be focused on the syllabus. Each and every topic you must cover, and because the information available is very vast, and you cannot grasp all the knowledge. So you must have the knowledge about the syllabi of the examination. So the syllabus for the preliminary examination, syllabus for the mains examination as well, and syllabus for the some CSAT portion also. So
phase one generally called as the preliminary examination. And in this examination, there are two papers for paper one and paper second. Paper one consists of general studies. General studies includes your knowledge about basics knowledge about physics, chemistry, economy, polity, science and technology, and other areas. And paper 2 consists of your aptitude knowledge, your teaching your logical abilities, your thinking abilities, and your reasoning abilities. And this portion is the second portion, that is the CSAT portion. This portion is optional, means you have to clear the paper only. There is no, the marks will be calculated on your you can say merit of preliminary examination. You must just clear the CSAT portion with one third of the total marks, and there is negative marking also. But the paper one, that consists of various questions of some other areas, you must the examination, the questions and your marks will be counted for your successful uh, prelim examination. तो पेपर वन में जो आपका होगा, पेपर वन में आपका जो टॉपिक्स होंगे, आपको वही मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी, उसी मार्क्स पे आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे. पेपर टू से आपका पेपर टू सिंपली फॉर द यू कैन से फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. You have to qualify with the one third of the marks, and then okay, but the marks would not be counted in overall overall preliminary examination. So, and then after the successful clearing of your preliminary examination, you have to go through the stage 2. Stage 2 consists of the mains examination. That is one of the toughest examination, and you have to write your answers in the sheets provided in the main examination, and then followed by the interview. So in a mains examination, you have to select your optional subject. Optional subject means there are various subjects in a UPSC examination. Various subject means you have to choose your subject like economy, polity, geography, and engineering, electrical engineering. These are these various subjects. The subject list you can find on the advertisement, and it is advisable for the engineering students that they go for any technical subject, because theoretical subject they not relate. Students feel very difficult to relate their theoretical subject with their technical knowledge. So it is advisable, from my point of view, it is advisable to just go for any technical subject that you can relate with your technical knowledge, like geography, even economy. Economic you can also relate, but there are a lot of opportunity in other subjects also. You can opt any subject. Means you have to choose one subject that is your optional subject, and you have to prepare thoroughly for that subject. And the syllabus for that are all the optional subjects also available. And this optional subject will consist of two papers. So in a written main examination, there are, you can say, 7 papers are there. 7 papers. 7 papers consist of of your optional subject, and one paper would be of your English. Means you have to write some questions and answers related to English. They will check your English knowledge, grammatical things, literature, and one paper would be based on your language subject. Means you have to choose your language. Means which language you are preferred. Suppose you are Gujarati, you can choose Gujarati. Suppose you are local regional language, you can choose that one also. Hindi also. So you have to choose one language, one English subject, two optional. So, and one essay. There is one separate paper for essay also. You have to write your essay
Essay means essay. They have to. You have to. There will be some topics would be given. You must have some expertise in thesis writing, essay writing. So they want to check that whether you are comfortable in writing also or not. So from this, as till now you can see the vastness and the broadness of the syllabus. So 7 papers you have to qualify each paper, and there are separate marks for each paper. So 2 papers for your optional subject, one paper for English, one paper for your language, and one paper for your essay subject. It means you have to add your essay, and 4 papers for your general studies. So these all includes, this all consist of, these are papers would be, uh, you have to write all questions which are asked in these several papers. 4 papers that are the, you can say, the general studies paper. They include each and everything. When you see the syllabus, you can see the syllabus for the all papers. Paper 1 for general studies, paper 2 for general studies, paper 3 for general studies, and paper 4 for general studies. And these are 4 papers include everything, means the current topics, history, geography, economy, women empowerment, ethics, science and technology, space technology, computer knowledge. Each and everything is included in these 4 subjects, 4 papers, which are general studies paper, and each paper have their dedicated syllabus. So I am going each and every time I am explaining, I am telling the syllabus, because syllabus is utmost important. Because whenever you have knowledge about the syllabus, your half of the preparation will automatically cover. Because whenever you lose your track, you start to read some other topics which are not mentioned in syllabus, you are just losing your precious time. And time is very important. In this examination, uh, time management is very important. So to your studies should be first according to syllabus, and then, so whenever you try to study, whenever you are going to study a particular paper, always have a copy of the syllabus. This is very important. And whenever you go for any mentor, any coaching, they will also tell you that you must have syllabus tongue. आपको syllabus हमेशा याद रहना चाहिए. Because whenever you read anything, if that topic or area falls in it in the vicinity of syllabus, you can read. And if you doesn't find that this portion is fall within the syllabus, you just simply skip it. Because it's simply uh, overburden unnecessary information for the examination. So these subjects are very important. And interview. So after clearing your first phase, you have to appear for written examination and then interview, and final merit will announce. And if you are there, then you are successful. So this is generally for a very brief introduction about your UPSC examination. How and what are the some things which you have in your mind while you are going to start with your preparation. So you can see the syllabus. You can see the syllabus, topics, and patterns. They're very vast things. So it is my point of view that whenever you start with your preparation, you first have go with any mentorship. Mentorship means you have some go to some any expert person. They will tell you the what are the uh, books. They will tell you the some exact areas that you must cover. Because whenever you try to study all those things by yourself, you will not concentrate. Because nowadays information is available from each and every areas, and um, if you find that all the information would be benefit for your examination, then it is not a right track. So you first
go with any mentorship, any if you have don't have any previous background, any things related, you go to any person, they will see exact things and domains related to your preparation. And this examination, this question, a very the content is very wide. So generally, this to clear this examination, you have a very you keep in mind the duration of the your study. Generally, it is advisable that uh, 2 years, minimum 2 years studies uh, must for successful candidate. 2 year study means you can see that paper one, prelim paper, and then main paper. Things are very wide. So whenever you start, you always start from the reverse. In this case, you can start from the mains also. Mains means whenever you start from the mains, your previous subject would automatically will be covered. अगर आप मेन से स्टार्ट करते हैं, मेन जैसे आप जिस पेपर वन मैंने बताया, पेपर टू बताया, पेपर 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज के, लैंग्वेज के, तो अगर आप स्टडी आप स्टार्ट करते हैं मेंस के क्वांटम, तो आप प्रिलिमिनरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा एंड देन यू हैव सफिशिएंट टाइम टू बी अपियर फॉर योर मेंस. अगर आप इसका स्टार्ट करते हैं, सपोज अगर आप स्टार्ट करते हैं कि मैं पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं मेंस का स्टार्ट करूंगा, देन आपके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जैसे आपने मान लीजिए आपने स्टडी आपने प्रीलिम के अकॉर्डिंग रखी, तो इन प्रीलिमिनरी सब्जेक्ट less as compared to your mains, or and topics are very less as compared to those also. So when suppose you clear the examination, after 4 महीने का गैप होता है केवल आपको मेंस ऐड करने के लिए. So in that meantime, you cannot prepare for all those subjects and your optional subject also. That is other people, that other things you have taken. ऑप्शनल भी आपको तैयार करना है, तो आपको 4 से 5 महीने में आप ऑप्शनल और मेंस और ऐसे राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग, लैंग्वेज आप नहीं कर पाएंगे. आपको ठीक सम टास्क हो जाएगा. तो आप जो है आपको अगर आप अपना स्टडी करना चाहते हैं, तो यू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन फॉर द मेंस. स्टार्ट पहले मेंस की तैयारी में आपका प्रीलिम्स अपने आप कवर हो जाएगा. ऑल द पोर्शंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. आप अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपके मेंस के टॉपिक का ही पार्ट है, शॉर्ट में. तो आपके लिए आपका उस टाइम अगर आप प्रीलिम एग्जामिनेशन आपको क्लियर हो जाता है, तो आप मेंस के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके लिए सफिशिएंट टाइम होगा. मैंने यहाँ तक सुना सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम तैयार करने के, प्रीलिम क्लियर करने के बाद मेंस में अपीयर नहीं होते. क्यों अपीयर नहीं होते? क्योंकि उनका मेंस तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास बहुत सारे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, तो वो उस टाइम ड्यूरेशन में दे आर नॉट फील कंफर्टेबल for that for writing that thing. So they lose their limited number of attempts. मालूम होगा किसी restricted their attempts. में आप अटेम्प्ट देखेंगे तो जनरल के बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट है. अलग अलग कैटेगरीज के ओबीसीज के आपके हैं अराउंड 9 है एंड अदर कैटेगरीज के लिमिटेड है. तो आप लिमिटेड है वो लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक ये बताते हैं कि उनका लास्ट तक आते आते अच्छी प्रिपरेशन होती है, बट दे लूज अटेम्प्ट्स, उनका अटेम्प्ट्स नहीं होते. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो आप जब भी आप अटेम्प्ट को आपको लूज नहीं होने देना चाहिए. आप एग्जाम में पूरी तरीके से करिए. व्हेनेवर यू फील कॉन्फिडेंट दैट आई विल राइट द मेंस एग्जामिनेशन, I can write the examination, then आप का प्री एग्जाम दीजिए, प्री क्लियर हो जाएगा. आप ऑटोमेटिकली जब आपका मेंस तैयार होगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्री क्लियर हो जाएगा. आप मेंस कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, उसके जो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप मेंस एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, और उस
duration mean time, that is mean time between you think. You can go through all the portion again and again. You can practice. That that duration should be the reserved for the practice, not for your preparation for first time. इसलिए मैंने कहा कि आपके दिस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए अराउंड 1.5 to 2 years इज वेरी मैंडेटरी फॉर दिस एग्जामिनेशन. आपको एक्सटेंसिव स्टडीज फॉर 2 years कंपलसरी है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट यू वांट टू दिस एग्जामिनेशन. You have, whenever UPSC declares their examination, you have heard that various students have cleared the examination, but but the thing is that they appear first time. They whenever they cover all those things, वो पहली बार अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन उनकी स्टडी आपकी 2-3 साल से चल रही होती है. वो स्टडी 2-3 साल से कर रहे होते हैं. जब पूरी स्टडी में कंप्लीट हो जाती है, then they appear for the examination and they clear the first attempt. So this is the logic behind clearing this examination in first attempt. तो अगर तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर होने की लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज है. नहीं तो आप उससे क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मान एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, मेंस में अपेयर होते हैं, तो आप अगर उसको नहीं क्लियर पाते हैं, देन यू विल लूज योर अटेम्प्ट आल्सो एंड यू हैव स्टार्ट विद द फ्रेश. फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको. एंड दैट आल्सो आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा. आप यू डिप्रेस भी फील करेंगे. तो उससे कि आप एग्जामिनेशन, क्योंकि हर बार आप हर बार मेन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर बार कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है. तो उसके लिए आपको ये जो सेशन है आपको स्टार्ट करनी चाहिए. तो अब इसके लिए जो बहुत सारी जो आपका कंटेंट है, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको रखना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ask me that which source they should, which type of source material and what are the sources of source material. तो कहाँ से उनको source material आपको करना चाहिए. Source material, if you want to study, if you want to if you have done your mind, then you want to go for the examination, then आपको you have to start from the basics. सभी लोग कहेंगे कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए, बट दे रिकमेंडेड दैट यू शुड गो फॉर द एनसीईआरटी बुक फ्रॉम 6 to 12. ठीक है, वो भी सफिशिएंट, बट एनसीईआरटी बुक्स, if you go to read all the NCERT books, you will also lose your track. You read the 11th and 12th NCERT book. Read 11th, 12th NCERT book, and then you read the NCERT gist of all the subject. क्योंकि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो आपको एक स्टडी आपकी जो रहनी चाहिए, that should be compact, focused and to the point. तो मटेरियल आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होना चाहिए. तो आप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 11th and 12th की स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके बाद देन यू व्हेनेवर यू गो थ्रू ऑल दीज बुक्स बाय योरसेल्फ, you got the NCERT, you can easily download these NCERT gist, or even you can purchase some books also available. From that thing, you can grasp all things which are summarized in one book. आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, because whenever you want to go NCERT book, lot of things are there which are of course necessary, but that time is limited. Smart study करिए. You have to go focus on a smart study, cover all things in a less time and in an efficient manner. आप 11th-12th की स्टडी से स्टडी बुक से स्टार्ट करके आप एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो जो है आपका करंट अफेयर्स से यू हैव टू, फॉर दिस एग्जामिनेशन यू हैव एटलीस्ट two sources for study materials.
आपको एक सोर्स के कंसंट्रेट करना है, क्योंकि दैट whenever you go for a single point of source material, then you will not feel the intricacies, type of questions, type of things they ask in examination. So you must you have to focus on two type of study material. Type of study material means opting for any study material for any coaching, then आप दो कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप कंसिडर करें। उससे क्या होगा कि आपका जो मॉडर्न स्टडी में रहेगा वो होगा, और आप जो क्वेश्चंस के जो लेवल्स हैं आगे, क्योंकि हर जो आप अभी आपको देखेंगे कि एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस बहुत ही लिख आ रहे हैं। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं जनरली 2 पॉइंट नहीं रहते। दे हैव वन क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। दे एक क्वेश्चन में वो 5 क्वेश्चन डेटा पूछ लेते हैं। वो आप कैसे पूछते हैं, अगर आप कभी क्वेश्चन पेपर उठाकर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स केवल रटते हैं, मीन्स दे आर दी पीपल remembering things, the possibility of clearing the examination for those students is very less. They want the students which have their conceptual clarity. आप और क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते, दे क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल एबिलिटीज, बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑन मैथ्स। आप अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधे मैथ्स में ये नहीं पूछेंगे किस किस की बाउंड्री किससे टच होती है, वो मैथ्स का आपको मैप को पूरा आपका जो मैप आपके माइंड में होना चाहिए। मैथ के अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू दैट you must be on two type of sources। आप दो टाइप के सोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपकी स्टडी जो रहेगी आपकी मल्टी फोकस्ड रहेगी, आप तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से अवेयर रह सकते हैं। तो दो टाइप का आप स्टडी मटेरियल आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसके लिए जनरली सी सेट है, इसमें एग्जामिनेशन में मैंने बताया कि स्टार्टिंग लेवल सी सेट है, इसमें भी आपका जनरली जो आप टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए उनके लिए तो जनरली इजी रहता है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के सपोज इंजीनियरिंग फील्ड से स्टूडेंट उनके लिए दे फील कंफर्टेबल इन क्रिएटिंग द सी सेट पोर्शन ऑफ दैट प्रीलिम एग्जामिनेशन, बिकॉज जो प्रीलिम का जो दूसरा पेपर रहता है जो सी सेट पैटर्न पे रहता है, उसमें दे सिंपली क्वेश्चन लॉजिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एबिलिटीज, एनालिटिकल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, तो वो टेक्निकल स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल। But the students which are science, they feel very difficult to clear that portion। तो उनके लिए है कि they go to the very common book for this thing is the quantum cat। You can opt for quantum cat and RR and TMH book। These three books, this is very sufficient। You go to these books and to practice, then in that thing you can easily clear the CSAT portion of the thing, because it includes in books RSR, TMH and quantum cat। And this is also very for your CGL examination। CGL is again very good examination that is nowadays very competitive examination and graduate level examination। So you can also consider this for your CGL examination also। So your study for this CSAT portion should be focused on only 3 books and these 3, and your paper 1 for you have to study your main subject। Suppose you have taken an geography subject, then if you study in detail about that subject, means आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको अगर आप अपने
अपने अपना माइंड आपने मेकअप किया है कि वो वाट इज एग्जामिनेशन, तो आपको कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट चेक करना है, कैसे आपको सिलेबस, उसका सिलेबस जो है वो कैसे आपको कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, और उसके स्टडी कौन सी ओरिएंटेड किस ओरिएंटेड होनी चाहिए, उसका सोर्स मटेरियल आपको उसका कितने टाइप का सोर्स मटेरियल रखना चाहिए। और सीसेट एग्जामिनेशन जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये सीसेट इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप चाहे जितना भी पेपर वन में आप स्कोर कर लें, आपका प्रीलिम क्वालिफाई माना जाएगा। क्वालिफाइंग इन नेचर बट मैंडेटरी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सीसेट को क्वालिफाई करें। सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे एप्टीट्यूड वाला पेपर, तो आप बाकी आप पेपर वन जनरल स्टडीज में आपने कितना भी अच्छा स्कोर कर दिया होगा, आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। सो दिस इज वन ट्रिकी पार्ट। सो आपको वो आपको प्रिपरेशन पे भी रखना है। मेंस के लिए आप आएंगे, मेंस के लिए आपको इतने सारे सब्जेक्ट, मेंस के लिए जैसे आप मेंस का आप सिलेबस चेक करेंगे तो सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो उसको भी आप टू टाइप के स्टडी मटेरियल अपने साथ हमेशा रखिए सिलेबस। तो आप अगर मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले ले। ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, दैट इज वेरी टेक्निकल बेस, यू कैन लिंक all the content of that subject with your mathematics, आप उससे लिंक कर सकते हैं और आपको वो सब्जेक्ट आप जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि जैसे आप सब्जेक्ट को अगर प्रिपेयर करना चाहें तो कोचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, तो कोचिंग क्या उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आपको के पास लिमिटेड टाइम and you are financially sound, then at least go for any center, because that center expertise for examination. They have vast, they have good faculties, good teachers, which are clear. They will tell you the basics, how you should focus your study, how which type of material you should study, which type of books you should study, and how your study level. They will tell you, and the study material they also provide strategy focused. उनके अंडर आप अगर आप कर सकते हैं तो यू मस्ट गो फॉर दैट। एंड ये हेल्प ये भी मिलती है, अगर आप एग्जामिनेशन में आप आगे अगर हाई लेवल तक पहुंचते हैं तो वो एग्जामिनेशन में आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। दे विल कंडक्ट योर मॉक इंटरव्यू एंड इवन दे कंडक्ट मॉक पेपर आल्सो। सो तो आप थ्रू आप प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, सेल्फ स्टडी भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन दैट सेल्फ स्टडी यू हैव टू गो टू वेरियस टाइप्स। हर पर्सन का अलग पर्सपेक्टिव रहता है, अलग अलग एंगल से उसका कंटेंट वो बताता है, तो आप उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप फिर इतने सारे सिलेबस में आप आपकी डेडिकेटेड स्टडी होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आप अगर किसी कोचिंग के थ्रू अगर आप अटैच हो सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं, यहाँ तक कि अभी तो वीकेंड क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, अगर आप चाहें तो वीकेंड क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीकेंड क्लासेस भी स्टार्ट करके आप अपनी स्टडी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे जॉब, अब बहुत सारे स्टूडेंट कि क्या वो जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन था कि जॉब के साथ क्या ये सफिशिएंट है, क्या उनका माइंड मेकअप उनको करना चाहिए कि वो जॉब करते करते तैयारी करें, और हमारा क्या सक्सेस रेट, क्या सक्सेस रेट होना चाहिए, कैसे व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट आई विल एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो
इस पे मेरा ये एडवाइस कि बहुत सारे रेफरेंस है जो जॉब के साथ में है, with while in a job they clear the examination. It is up to you टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत सारे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ, प्राइवेट जॉब के साथ एग्जामिनेशन को क्रैक, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि दे आर दी इन टच विद सम सक्सेसफुल पर्सन with material and they are part with the some weekend classes they दिन में वो जॉब करते थे, शाम को वीकेंड क्लासेस करते थे, वीकेंड के एंड में भी करते थे, रेगुलरली भी करते थे। एंड इन दिस वे फुल कॉन्फिडेंट, और उन्होंने एक या दो अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर भी कर लिया। तो इसमें उन्होंने स्टडी फोकस स्टडी की, और उन्होंने किसी कोचिंग की हेल्प करी, कोचिंग की हेल्प के थ्रू अपनी स्टडी को बहुत फोकस्ड किया और 2 पॉइंट टाइम बॉन्ड मैनर में उन्होंने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंस के लिए अगर आप करते हैं ठीक है, लेकिन आप मेंस के लिए इट इज आल्सो एडवाइजेबल कि आप जब आप मेंस का सब्जेक्ट तैयार करने के लिए जब आपको माइंड मेकअप करें तो आप एक बार उसके लिए लीव ले सकते हैं, बिकॉज this examination generally check all type of all angles of your personality. Even personality test is also a part of this in an interview. आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे जो प्रिपेयर करते हैं, वो हर बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, रिटन क्लियर, इंटरव्यू में फेल जाते हैं। आपने सुना होगा कि वो रिपीटेटिवली हर बार वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? वही कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी हो जाता है वहाँ। आप ऐसा नहीं कि अगर आपने पूरा कंटेंट क्लियर कर लिया, आपकी रीडिंग क्वालिटी अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, आप चीज़ों को अच्छी ग्रैस्प कर लेते, बट योर ओरल इलोकेटिव एबिलिटी आपके पास नहीं, डोंट हैव एनी leadership ability, your views, how to express your view efficiently, and then not able to go through the interview process. You will find it is very difficult to appear for interview, because the interview panel have various members. One subject expert also, even some civil servants also are part of the exam in an interview process. So they check all type of your personalities, whether you are good in a communication, whether you are good in decision making, whether good in your background knowledge, each and everything. So that's also the part of that thing. So आपको इंटरव्यू तक भी आपको जो तैयारी को मॉक इंटरव्यू करके, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ, आप किसी कोचिंग के थ्रू अगर आप अटैच रहे, आप उनके लेंगे, वो कंडक्ट करके यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आप सिंपली व्हेनेवर यू फेस फर्स्ट टाइम इंटरव्यू विदाउट एनी प्रिपरेशन, यू विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। तो अगर आप कहीं पर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आप एक दो मॉक इंटरव्यू आप फेस करते हैं, देन कंफर्टेबल। जैसे मैंने जब यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया था, तो देयर आर वेरियस पर्सन्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सम पर्सन्स, इवन एनी टाइम they call for not any government official, some other areas. So they interview panel में some other panels है, वो different type के एरिया से हो सकते हैं। They even check your ethics. तो पेपर लास्ट पेपर रहा जो मैंने बताया, उसमें एथिक्स का भी क्वेश्चन रहता है। एथिक्स की आपके प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, पर्सनल क्या है, तो ये क्वेश्चन भी उसमें इम्पोर्टेंस रहता है।
तो अगर आपको ये अगर आप जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उसका अलग प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। Early students which want to prepare for their examination from your very ग्रेजुएट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक अलग प्लान ऑफ एक्शन है। तो आपको अगर जैसे बहुत सारे लोग, अगर आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो जो ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में ले लेते हैं। ये भी एक अलग एक अच्छी स्ट्रेटजी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन करने की, कि जो वो ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल का भी रखते हैं और वो स्टडी अपनी वो स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर देते हैं। So at the end of their graduate, whenever they graduated, they able to compare. They have completed all courses. तो उनका भी सिलेबस भी कंप्लीट का होता है एंड दे सिंपली अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड दे क्लियर द। तो ये एक लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजी है जिससे भी आप एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर सकते हैं और ये आपके हेल्प भी करता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए रहता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब ग्रेजुएट करते हैं they go for the preparation. In that case, they have to choose optional subject. उनको optional subject choose करना होता है. So they feel very difficult type of optional subject they choose, because अगर आप optional choose कर लिए तो आप बार-बार आपके बहुत एक स्कोप रहता है कि आप उसको चेंज कर पाए। सपोज आपने एक ज्योग्राफी ले लिया, आप नहीं कर पाए, फिर आप नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि मैं इकोनॉमी ले लूंगा, तो आपको फिर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपका percentage of attempt and successful rate become सक्सेसफुल रेट जो है आपके बहुत कम हो जाएंगे। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो? यस सर कंटिन्यू सर। हेलो राजीव, मिस्टर राजीव? यस सर कंटिन्यू सर, यू आर ऑडिबल। So this is the intricacies that should be keep in mind whenever any student or any person going to start with this examination. And examination को क्लियर करना एक आप भी कह सकते, मैं नहीं कहता कि इम्पॉसिबल, बट यू हैव योर फैमिली सपोर्ट एज वेल, because your mental peace is very important for this examination, because time consuming and you can say a long duration, this long duration आपकी स्टडी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन आपके पेशेंस में, यू हैव टू वेरी गुड इन पेशेंस, आप लूज नहीं कर सकते, कैन नॉट लूज योर स्टडी इन मिड ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट आप नहीं ट्राई करना चाहते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे जो चार बार एक ही चीज को स्टडी करते थे, 4 बार स्टडी किया, 5 बार स्टडी, पांचवें अटेम्प्ट में निकाला, लास्ट अटेम्प्ट में निकाला, लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना, अगर आपको पहली बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द स्ट्रेटजी एंड वेरी न्यू विगोरिटी, कि आप सेकेंड अटेम्प्ट में उससे अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर। अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, देन यू विल चेंज योर स्ट्रेटजी एंड थर्ड अटेम्प्ट में आप उससे अच्छी तरीके से करें। बहुत सारे मैंने सुना कि वो इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं, हर बार उनका प्री और मेंस निकलता है लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लूज नहीं होते, वो दे डजंट लूज, क्योंकि उनका हर बार मेंस निकलता है, हर बार प्री होता है, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो ये भी एक वेरी डिप्रेसिव, कहीं ना कहीं लैक करते होते हैं वो। तो इसलिए आपको फैमिली सपोर्ट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फैमिली सपोर्ट है, देन दे विल आल्सो गाइड, दे विल कीप मोरल, ऑलवेज कीप योर मोरल अप, एंड आपको इंकरेज करते रहेंगे, और दे विल नॉट फोर्स यू टू जस्ट
skip this idea for this preparation. तो आपका फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, एंड देन डेडिकेशन इज important. And finally my last dilemma is that बहुत सारे स्टूडेंट को डिलेमा रहता है कि बैकअप प्लान फॉर दिस एग्जामिनेशन, बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि दे ऑप्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो उनको जॉब छोड़ के ही प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनका बैकअप प्लान क्या रहना चाहिए. सपोज दे विल नॉट एबल टू क्लियर एग्जामिनेशन इन limited attempts, what will they do, because they lose their time, precious time, precious time that is very beneficial for their career also, career building also. So ये बहुत कैन से अटमोस्ट डिलेमा रहता है स्टूडेंट्स में कि क्या उनके पास बैकअप प्लान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. So this backup plan question should be depends on the person to person. मुझे लगता है I feel that if you start in early stage, in that case you don't need any backup plan. अगर आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे तब आपको बैकअप प्लान की जरूरत पड़ेगी. Nowadays the government is mulling that they are restricted, going to consider the age limit for this the appearing for the examination, because they want the fresh candidates, means the candidates which are very young, means not so around their 20s. They don't want students which are in their 30s. So whenever you start for this examination in early, there is no need for any backup plan. You can clear, obviously you will clear all the examination. आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, प्लान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप उसमें नहीं सक्सेसफुल होते हैं, then you have sufficient time for choosing other career also. आप जितना भी लेट स्टार्ट करेंगे, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब आपका you're going to you will going to consider your career plan also, और आपकी जो कुछ चांसेस भी हैं, अगर आप वो लिमिटेड चांसेस कि आप अगर नहीं क्लियर हो, डू फैमिली प्रेशर्स भी आने लगता है. तो इस केस में आपके पास बैकअप प्लान तब जरूर इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो बैकअप प्लान अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं देन यू मस्ट थिंक अबाउट द बैकअप प्लान. आपके पास बैकअप प्लान, आप उसका आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपका अगर एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है, बिकॉज whenever you are preparing for this examination, that is your golden time. And अगर उसमें अगर आप good enough, because successful rate of clearing this examination very low. Thousands में से आपके, अगर आप एवरेज माने thousands में से आपका जो 10% रेट है, बहुत कम रेट है. प्रीलिम्स का मेंस का तो 1%. ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स भरते हैं, वैकेंसीज आती है 1000. Each and every year you can see the number of vacancies are diminishing and number of candidates appearing for the examination is increasing. So you can see the gap, and you can see the gap. जो गैप बढ़ता जा रहा है तो कॉम्पिटिटिव भी इंक्रीज होती जा रही है. So and lot of daily wages and daily the things are also changing. That they want to restrict the ages, they want to restrict their attempts, and so on. So you have to consider in a holistic manner to prepare for that. If you prepare for that also, what is your backup plan? If you want to start in an early stage, then in early stage से start करना चाहिए, and then you want to go for very coaching, then आप किस स्टेज पर कोचिंग से स्टार्ट कर देना चाहिए. टाइम आपके पास लिमिटेड है और अटेंड भी लिमिटेड है, और आपके पास जो restrictions हैं, day by day the restrictions are increasing on these various examinations. आपको आप
prepare करिए. My best wishes are all the students who are going with the examination, but start in a timely manner, in a restricted manner, dedicated to study, and if possible, some mentorship. So best of luck for the aspiring students who may join this coveted service in the future. Thank you everyone for sharing my views and thank you. Hello, Rajiv sir. Yes, sir. I'm Yes, communicating sir. with the students regarding the question. Is there any students have the query regarding this? So I'm fetching the questions from the student side, sir. Mr. Pankaj, sir, there is a no questions from the viewer side right now. So we are concluding our today's webinar. So thank you so much, sir, to have yourself over here and sharing the really valuable information regarding the particular topic, sir. And on behalf of the Bar University, I'm also thanking you for the same have yourself over here and share the really valuable knowledge regarding that, sir. Okay. Thank you. Thank you, Pankaj sir. Okay, thank you, Rajiv. Should I go offline? Uh, yes, I think recording also off and can. Yes, sir. I turn off the recording. Should I go offline, Rajiv? Yeah, yeah. Okay, okay. Yeah. Okay, Pankaj sir. Yes, everyone can leave.